Based on Kirchhoff's law, there is a device called Wheatstone bridge. In earlier times, there was no mobiles, there was no telegrams, right? There were only phones, and even for the phones, there were lines, phone lines were there, which were sometimes underground, which were sometimes overhead also. So at times, when the lines are underground, these one pair of line will carry, one telephone line, one message at one time. So sometime what happens is these lines get short circuited. Then how to find the location where these lines have been short circuited? So there was a scientist by the name of Wheatstone. He basically discovered this particular instrument to find resistance of a wire. So we'll use this Wheatstone bridge, find the unknown resistance. Suppose the wire is broken here, short circuited here, and then we'll find the resistance of this wire. And the resistance of this wire, then we can know at what distance from the position of the instrument this wire has been short circuited. And then you do the digging over there and repair that wire. So this was the basic purpose of Wheatstone bridge, to find location of short circuit or breakage of a wire using the concept of finding resistance and hence finding the distance. Now, Wheatstone bridge basically consists of four resistors, out of which one is unknown resistance. You can say this unknown resistance. Q and R are known resistance to us, and P is a variable resistor. You can say P is a variable resistor, S is unknown resistance, and this is the circuit. Right? There's a galvanometer between, say, the point B and D, junction B and D, this junction and this junction C. As you know, galvanometer is a device to know the presence of current in a circuit, and there's a key over here. The moment you press the key, the current will start flowing in the circuit. Over here, you use basically a variable resistor. This variable resistor could be a resistance box. We can't use a rheostat because rheostat is also a variable resistor. But the problem with the rheostat is that we don't know how much resistance is connected in series. So there's a device called resistance box. You must have seen this resistance box in your lab. Have you done any experiment so far? कैमरा ऑन कर लो सब लोग. तो रेसिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है कि कई सारे रेसिस्टर्स होते हैं, कीज होती हैं, उस पर लिखा होता है. जैसे यहाँ पे एक की लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है सपोज 2 ohm. So that way there are so many resistors like 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 100 ohm, 1000 ohm, infinite ohm also. So many keys are there. So whatever key you take out, that particular resistance comes into series. So the basic difference between a resistance box and a rheostat is that a rheostat is also a variable resistor, but we don't know what is the exact value of resistance which is coming into the circuit. Whereas in the case of a resistance box, we exactly know what is the value of resistance which has we have taken out, right? Suppose I take out a 2 ohm key. Now I'll tell you how this resistance box works. Suppose मैंने 2 ohm की एक की बाहर निकाली जिसपे 2 ohm लिखा हुआ है. तो होता है क्या है कि this key is made of a very good conducting material like copper. ये कॉपर का बना हुआ है. ये रेसिस्टेंस बॉक्स का
टॉप सरफेस है। तो अभी क्या हो रहा है, सिंस दिस इज मेड ऑफ कॉपर, ये भी कॉपर का है, द करंट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस एंड करंट फ्लोज थ्रू इट एंड देयर इज नो रेसिस्टर इन सीरीज। और यहाँ पे एक 2 ओम की कॉइल इस तरह से कनेक्ट हो जाती है, दिस इज 2 ओम कॉइल। तो अगर एज लॉन्ग एज की इज देयर द करंट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, करंट उससे फ्लो करेगी, रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो नहीं करेगी। अब व्हेन यू टेक आउट दिस 2 ओम की, व्हेन यू टेक आउट दिस 2 ओम की, तो क्या होगा, आई हैव टेकन आउट द 2 ओम की, द करंट हैज टू पास थ्रू दिस। तो करंट को अब यहां से पास करना पड़ेगा, इस 2 ओम की कॉइल से करंट को पास करना पड़ेगा। So that's how this 2 ohm resistance will come into picture. So a resistance box works like this. It has number of keys. उन कीज के ऊपर रेसिस्टेंस लिखा होता है, कितने रेसिस्टेंस का वो की है। एक इनफाइनाइट रेसिस्टेंस की की भी होती है। इनफाइनाइट में क्या होता है, इनफाइनाइट में देयर इज नो कॉइल एट ऑल, बिकॉज जब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस में सर्किट में लाना है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट हैज टू बिकम जीरो, देयर इज नो पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, मतलब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस सीरीज में आ गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जो भी हम की बाहर निकालेंगे उतने ही ओम का एक कॉइल लगा होता है, करंट हैज टू पास थ्रू दैट कॉइल एंड दैट पर्टिकुलर रेसिस्टेंस कम इनटू पिक्चर, वो उतना सीरीज में कनेक्ट हो जाता है। So resistance box is also a variable resistor, and the best part of resistance boxes है हमें पता होता है हमने कितने ओम का रेजिस्टेंस निकाला है। So basically we have four resistors. P is a variable resistor, resistance box भी हो सकता है। S is unknown resistance, Q and R हमें मालूम है, हमें उनकी वैल्यूज पता होती है। तो अब क्या करते हैं, वी प्रेस द की, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सपोज यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, because current will divide, some current goes here, I minus I1, because since I1 current has gone that side, यहाँ पे remaining current आएगा। This is a galvanometer, तो galvanometer के थ्रू सपोज IG करंट जा फ्लो कर रहा है, and this is I1 minus IG, this is also I1 minus IG, perfect, this is IG। अब एक बात बताओ, डी जंक्शन पे एक करंट I माइनस I1 आ रहा है, एक ऊपर से IG करंट आ रहा है, दोनों मिलके कितना करंट बन जाएगा, इस जंक्शन में दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना करंट होगा, यहाँ पे करंट होगा I माइनस I1 प्लस IG। बात समझ में आ रही है, दोनों करंट ऐड हो गई। और फिर सी जंक्शन पे जरा देखो, I1 माइनस IG एंड दस, दोनों को ऐड करके देखो क्या बचेगा, IG से IG कट गया, I1 से I1 कट गया, यहाँ पे वापस I करंट आ गया। तो दिस इज हाउ द करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इस मोमेंट पे क्या हो रहा है, गिल्वानोमीटर इज नॉट, गिल्वानोमीटर शोइंग डिफ्लेक्शन, देखो गिल्वानोमीटर से IG करंट पास कर रहा है। तो P इज ए वेरिएबल रेसिस्टर ओवर हियर, जिससे हम रेसिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। S यू कैन से अननोन रेसिस्टेंस, ये डेरिवेशन मैंने उसमें नोट्स में किया हुआ है। एंड Q एंड R आर नोन रेसिस्टेंस, हमें मालूम है इनकी वैल्यू। सो what do now we do is that we keep on changing the value of P, we keep on changing the value of P till we get no deflection in the galvanometer। जब डिफ्लेक्शन द galvanometer जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स IG has become zero, दैट मीन्स B और D का पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो जब, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट, करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। अगर सपोज करंट बी से डी फ्लो कर रहा है, इसका मतलब बी का पोटेंशियल ज्यादा है, डी का कम है, बिकॉज करंट इज कन्वेंशनली मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन जब करंट जीरो हो जाएगा, विल से द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस, मतलब पोटेंशियल ऑफ बी एंड पोटेंशियल ऑफ डी हैज बिकम द सेम। तो उस सिचुएशन में ये हट जाता है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय आता है। तो हम उसको डिराइव करेंगे, दैट विल बी 3 मार्क क्वेश्चन फॉर यू। डिराइव द कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज। तो अभी इस सिचुएशन में जब ब्रिज बैलेंस नहीं है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी इक्वेशन किरचॉफ्स लॉ को लगा के इन द लूप ए बी डी ए,
तो सिंप्लीफाई मत करना, ब्रैकेट को ओपन मत करना, सिर्फ इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। लूप ए बी डी ए में अगर हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करें, लूप रूल तो क्या बनेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव आई वन पी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई जी इंटू कैपिटल जी। जी इज अ रेसिस्टेंस galvanometer. Over here, G is resistance of galvanometer. Galvanometer is a device which basically tells us about the presence of current. It just to know the presence of current, detection of current. का मेजरमेंट करने के लिए हम अमीटर यूज करते हैं। देन डी से ए पे आओगे तो हो जाएगा प्लस आई माइनस आई वन इंटू द रेसिस्टेंस। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, so I've used Kirchhoff's rule over this loop. I take another loop. We are deriving the condition for balanced bridge. BCDA. BCD DB. BCDB की क्वेश्चन लिखो और ब्रैकेट्स को ओपन मत करना, एज इट इज छोड़ना उसको। लूप BCDB, B टू C जाएंगे द डायरेक्शन करंट, तो माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू एस, सी टू डी ऑपोजिट टू करंट, तो प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये हो जाएगा। एंड देन ऑपोजिट टू करंट, तो प्लस G into I equals to 0. इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? दिस फाइन। नाउ वी keep varying this the variable resistor P till we get IG equal to 0. We keep on changing value of P till IG is equal to 0. That is bridge is balanced. तो हम P की वैल्यू को तब तक चेंज करते हैं जब तक कि डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर जीरो नहीं हो जाता है। मतलब अब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। फिर उस सिचुएशन में इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन वन बिकम्स, इसमें अब आई जी को जीरो डाल दो, आई जी को जीरो डालो, तो आई वन पी माइनस, ये तो जीरो हो गया, प्लस आई माइनस आई वन क्यू इज इक्वल टू जीरो, और आई वन पी इज इक्वल टू माइनस आई माइनस आई वन क्यू आ गया। इक्वेशन नंबर थ्री ले लेते हैं। सिमिलरली इक्वेशन टू में क्या होगा? आई जी को जीरो डालो, तो माइनस आई वन इंटू एस, ये हो जाएगा आर इंटू आई माइनस आई वन, आई जी जीरो हो गया, और यू कैन से माइनस आई वन एस इज इक्वल टू माइनस आर इंटू आई माइनस आई वन। इक्वेशन नंबर फोर देख लो एक बार, हमने आई जी को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन वन एंड टू में, बिकॉज Wheatstone bridge is balanced now, therefore IG has become zero. अब क्या होगा? इक्वेशन थ्री को फोर से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन थ्री बाय फोर, देखो क्या आएगा? माइनस आई वन पी बाय माइनस आई वन एस इज इक्वल टू माइनस माइनस आई वन इंटू क्यू डिवाइड बाय माइनस आई वन आर, ये कट जाएगा पूरा। एज अ रिजल्ट वी गेट पी बाय एस इज इक्वल टू क्यू बाय आर। थोड़ा और चेंज कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, we get P by Q is equal to R by S. So this is nothing but balanced bridge.
This by this equal to this by this. We have used this many a times. So this derivation is worth 3 mark. ये नोट्स में मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी. सर ने तुम्हें फिजिक्स के मार्क्स दे दिए थे एमसीक्यू वाले. Yes, sir. क्या है मार्क्स बताओ. मुस्कान, महक, सॉरी. So 60 60 on it was or 26. 104. 26 mark का था ना यहाँ. Hmm. That, Hmm. Uh, into 4. yeah, Oh, 26 questions were there, each for 4 marks. You got 60. That's pretty less. yes, sir. Trisha, So 72. okay. Maithili, Sir, 80. 80. And Ishita, So 56. 56. Pretty less. दो और भी कम है. सबसे कम कैसे आया तुम्हारे. एमसीक्यू में इतनी गलतियां कैसे हो रही हैं. So assertion reasoning में गलती हुई थी. अच्छा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका मतलब अभी तक. एमसीक्यू में मार्क्स नहीं कटने चाहिए ना, बिकॉज इट वाज कितने का पेपर हो गया. 98. नहीं, 104 मार्क्स ना. Yes, sir. तो आउट ऑफ 104 तो 56 तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 50% हो गया. कैसे काम चलेगा इशिता. एंड महक, लोग पढ़ नहीं रहे क्या अभी. स्कूल में कोई टेस्ट नहीं है इसका मतलब पढ़ाई बंद है. मुझे तो ये लग रहा है. I'll do one thing. I'll conduct another test on the same, like ये भी अभी खत्म हो जाएगा ना. तीनों चैप्टर का मुझे लगता है वापस एक एमसीक्यू और एक नॉर्मल, सिर्फ इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मल पेपर लूंगा और तीनों चैप्टर मिला के एक एमसीक्यू करूंगा. ठीक है. क्वेश्चन करो. Find net resistance between A and B. Find net resistance between A and B. अब क्या करना है. यू वांट टू टेक एमसीक्यू का टेस्ट ऑल 3 चैप्टर्स और यू वांट टेक ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले, एमसीक्यू एंड द सब्जेक्ट नॉर्मल टेस्ट. दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ. व्हीटस्टोन में मीटर ब्रिज है, वो कर लेंगे अब. और सेल का तो मैं डेरिवेशन याद करनी है, वो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है नोट्स में, वो पढ़ लेना. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. You want MCQ all 3 chapters together. You want current electricity normal test like one we had for chapter 1. MCQs plus uh, subjective as well. Decide करके मेरे को ग्रुप में बताना. Answer this.
assertion reason to 6 questions थे इशिता, only 6 questions were there. नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था. देखो क्या नजर आ रहा है तुम्हें, सीरीज पैरेलल और समथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन. अकॉर्डिंगली डिसाइड एन आंसर. क्या हो रहा है, सीरीज पैरेलल हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या क्या लग रहा है इसमें तुम्हें, इतना टाइम क्यों लग रहा है, बताओ जल्दी. त्रिशा कोई सीरीज में है, एनी रेसिस्टेंस विच आर इन सीरीज. नो सर. फिर पैरेलल सर इसमें किरचॉफ ही लगेगा शायद. किरचॉफ ही लगेगा. और व्हिटसॉन ब्रिज नहीं लग रहा है इसमें. जब भी तुम्हें 5 रेसिस्टर इकट्ठे कनेक्टेड नजर आए तो ट्राई टू थिंक ओवर कि इज इट पॉसिबल दैट वी कैन समहाउ अप्लाई व्हिटसॉन ब्रिज. देखो इफ यू नेग्लेक्ट दिस पार्ट फॉर, इतना पार्ट मत देखो एक बार. अब सिर्फ इतना पार्ट देखो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ. लुक एट दिस पार्ट. यस सर, वेटस्टोन. दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस. शेप पे मत जाओ. अगर इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ, तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस आ रहा है. बैलेंस ब्रिज हो रहा है. 10/5 इज इक्वल टू 20/10. मीन्स ये वाला जो 5 है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा. बिकॉज इफ इट्स बैलेंस ब्रिज, बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाता है. दैट मीन्स यूजिंग बैलेंस ब्रिज दिस विल बी नाउ लाइक दिस. ये हो गया. अब ठीक है. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 40/3, दिस इज 10/3, this is 10, this is 20, this is 5 and this is 10. अब क्या करना चाहिए शिता, कुछ सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है. 10 20 series, 5 10 series. ठीक है.
परफेक्ट करो, नेक्स्ट बनाओ। 10-20 सीरीज हो गया, 5 और 10 सीरीज हो गया, नेक्स्ट डायग्राम बनाओ। ड्रॉ द नेक्स्ट डायग्राम एंड टेल मी क्या है। 10-20 हटा के you can put one single resistor, तो मैंने हटा के सिंगल रेसिस्टर लगा दिया 30, एंड दिस इज सिंगल रेसिस्टर 15। अब क्या करना चाहिए महक? So all four are in parallel. Yes, all four in parallel. To do that, चारों को पैरेलल में करो एंड टेल मी द फाइनल आंसर। असाइनमेंट का तुम्हें हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा अगर बहुत से मार्क्स लाने हैं। 70 में से 69 and 68 if you are targeting, you have to answer each and every question of the assignment.